Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 1. I am Samra Rashid, your science teacher here in BFC Nushair of Rose. Dear students, how are you? I hope you all will be fine. Dear students, as we studied in previous lecture about flowers, fruits and vegetables. Okay. Now today we are going to solve exercise number 1. Choose the correct answer on book page number 34. So dear students, let's open your book page number 34. Choose the correct answer. First question is, which of these is not a part of a plant? Option A, flower. Option B, leaf. C, soil. D, root. Dear students, flower is a part of a plant. Leaf is also a part of a plant. Root is also a part of a plant, but soil is not a part of a plant. So dear students, the correct answer is option C. Okay, we will be tick on option C, soil. Next is, what's the name for a plant that grows along the ground? Creeper, peeper, climber, cactus. Dear students, the correct answer is option A, creeper, because creeper is a plant that grows along the ground. These all three plants are not grows along the ground. बेटा ये जो तीनों प्लांट्स हैं ये ग्राउंड पे ग्रो नहीं करते, बट जो क्रीपर प्लांट है ये कहाँ पे ग्रो करता है? ग्राउंड पे. बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से क्रीपर प्लांट कहाँ पे ग्रो करता है? ग्राउंड पे. ओके, जैसे कि वाटरमेलन है वो स्टेम वगैरह पे ग्रो नहीं करते, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? अलोंग द ग्राउंड. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट्स द नेम फॉर अ प्लांट दैट कैन ग्रो अप अ वॉल? क्रीपर, पीपर, क्लाइंबर, कैक्टस. Students, the correct answer is option C, climber, because climber is a plant that can grow up a wall. क्लाइंबर एक ऐसा पौधा है जो वॉल पे ग्रो करता है. क्लाइंबर प्लांट किसे कहते हैं? जो वॉल्स पे ग्रो करता है. जैसे कि आपने बहुत से गेट्स ऐसे देखे होंगे जिनकी प्लांट्स लगे होते हैं, जिनके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? प्लांट्स लगे हुए होते हैं. जैसे कि आपने बहुत से प्लांट्स देखे होंगे जो गेट पे ग्रो करते हैं, गेट पे लगे हुए होते हैं प्लांट. वो प्लांट कौन से होते हैं? क्लाइंबर प्लांट. सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल बी टिक ऑन ऑप्शन सी, क्लाइंबर प्लांट. ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्रूट? मैंगो, बनाना, पोटैटो, पपाया. डियर स्टूडेंट्स, मैंगो इज अ फ्रूट, banana is also a fruit, papaya is a fruit. So the correct answer is option C, potato, because potato is not a fruit. So dear students, we will be tick on option C, potato. Okay, last is, which of these vegetable is the leaf of a plant? Option A, spinach, carrot, pepper, potato. Dear students, the correct answer is option A, spinach, because spinach is a vegetable, is the leaf of a plant. प्लांट की लीफ वाली वेजिटेबल कौन सी है? स्पाइनच. ओके, dear students, we have completed exercise number 1. Now we are going to solve exercise number 2. What does a plant need to grow well? Dear students, प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है अच्छे से ग्रो करने के लिए? As we studied in previous lecture about growing of plant. Dear students, so a plant need to grow well sunlight, water, air and soil. Okay, let's write here sunlight, number 1. Sunlight, water, air and soil. ओके, प्लांट को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट की, वाटर की, एयर की और सॉइल की. ओके, डियर स्टूडेंट्स, वी हैव completed
also exercise number 2. Now it's turn to your homework. Now today's your homework is solve exercise number 1 and exercise number 2 on book page number 34. Also memorize these 2 exercise. बेटा आपको ये दोनों एक्सरसाइज अपनी बुक पेजेस पे करनी है और आपको ये मेमोराइज भी करनी है. Okay students, we will continue our next class tomorrow. Okay, take care. Allah Hafiz.